Kashi is fully prepared to host people coming from Tamil Nadu for the month-long Kashi Tamil Sangamam program, which will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at the amphitheatre ground of Banaras Hindu University today. Before his arrival in Varanasi, the Prime Minister tweeted, and I quote, "Kashi Tamil Sangamam is a unique program. It gives a special opportunity to celebrate and reaffirm our deep-rooted bonds. One of the greatest Tamil literary figures of all time, the Mahakavi Bharatiyar's home situated on the banks of Hanuman Ghat will also be a pilgrimage for the visitors to the Kashi Tamil Sangamam. The purpose of the event is to celebrate the age-old relationship between Tamil Nadu and Kashi. Significantly, both the states of the country have been famous education centers. At the same time, more than 2,500 delegates from Tamil Nadu will come to Kashi to participate in this event. Apart from this, an exhibition related to handlooms, handicrafts, books, cuisine, art, history, tourist places, etc. of both the states will also be organized in Kashi for the next 1 month. The inauguration, of course, of the Tamil Kashi Sangamam is going to take place today. The Prime Minister has just arrived in Varanasi moments ago. That picture there is from the airport when the Prime Minister landed, in fact, in Varanasi. And the Prime Minister is going to be inaugurating this unique 30-day experience in Varanasi. Joining us on the broadcast, my colleague Pankaj Chaturvedi to give us more on the story. Pankaj, we're given to understand that the Prime Minister has already landed in Varanasi. Am I right? When exactly is he going to be heading, to the Banaras Hindu University to inaugurate the Tamil Kashi Sangamam? Pankaj, if you can hear me. All right, we're just going to try and get that connection sorted. However, the latest, of course, that we're gathering for you is that the Prime Minister has already landed in Varanasi, and very shortly he's going to be headed to the Banaras Hindu University. And as he heads to the BHU, it's just a matter of time before he inaugurates the Tamil Kashi Sangamam. Joining us on the broadcast is my colleague Martin. Martin, if you can hear me, what more details are you gathering? Has the Prime Minister already landed in Varanasi? What is the update? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री काशी तमिल समागम के लिए जो है वो बनारस पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में जो है बीएचयू जाएंगे, जहां पे बीएचयू एमपी थिएटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया है जहां पे वो काशी तमिल हिंदू समागम का जो है वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इसमें करीब जो है 2500 जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ तमिलनाडु से उसके जो है डेलीगेट्स आएंगे काशी में, और इसको लेकर तमाम तैयारियाँ की गई हैं प्रशासन की तरफ से, खासतौर से बनारस प्रशासन की तरफ से। 10,000 के आसपास जो है पुलिस बल तैनात किया गया इस पूरे समागम के लिए। 1 महीने तक ये समागम चलेगा, जिसमें जब एमपी थिएटर जो बीएचयू का है जहां पे ये पूरा समागम होना है, वहां पे 75 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो क्षेत्र है, चाहे वो कला हो, लिटरेचर हो, आपका कुजीन हो, इस तरह अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं जिससे रूबरू कराया जाएगा। चूँकि इस जो समागम का जो आयोजन मुख्यतः इसलिए किया गया है कि जो चूँकि काशी की बात करें और तमिलनाडु की बात करें तो ये दोनों ही जगह हैं। अगर सनातन परंपरा के हिसाब से देखा जाए, हिंदू रीति रिवाजों के से देखा जाए, तो दोनों ही जो है स्तंभ रहे हैं, और दोनों जगह जो है चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, दोनों जगह ये जो है पुराने समय से ही ये प्रफुल्लित होते रहे हैं, जिसको लेकर ये समागम का आयोजन किया जा रहा है ताकि रिडिस्कवर किया जा सके उस पूरी जर्नी को, और दोबारा से जो इसकी संस्कृति है और कल्चर्स हैं उनको दोबारा से एक साथ मिलाकर जो है जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। जी, हमारे साथ बने रहिए। इनफैक्ट वी आर आल्सो बीइंग जॉइंड बाय कुवै सत्यन, ही इज एन AIADMK spokesperson. Mr. Satyan, thank you for joining us. Can you hear me?
Yeah, I can. All right, Mr. Satyan, how do you, your first reactions with regards to this Kashi Tamil Sangamam that is taking place in Varanasi? The Prime Minister is going to be inaugurating it. This is the Prime Minister's big One India push. How does the AIADMK want to respond to this? First reaction, sir. It's evident that and Kashi has got he cites Subramanian Bharati, the poet from Tamil. He cites. All right, there seems to be a connection issue there with you, Mr. Satyan. We're just going to try and get you repashed on the broadcast. But in the meantime, viewers, of course, these are live shots that are coming in from Varanasi. That there is the Prime Minister. He's already arrived at the Banaras Hindu University, if I'm not mistaken. And the Prime Minister is going to be very, very shortly launching the Tamil Kashi Sangamam. And these, of course, are visuals that are coming in live from Varanasi as we speak. My colleague Martin still with us on the broadcast. Martin, it seems that the Prime Minister has just arrived at the Banaras Hindu University in Varanasi. Am I right? Are those the visuals from BHU? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है बीएचयू पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है यानी कि एमपी थिएटर ग्राउंड, वहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ ही साथ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। तो तमाम और साथ में जो है जो तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों से जो डेलीगेशंस आया हुआ है वो उनके जो प्रतिनिधि वो साथ में रहेंगे और उसके बाद इस मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, यानी कि काशी तमिल हिंदू समागम का उद्घाटन होगा। इसको लेकर बता दें कि काफ़ी पहले से तैयारियाँ चल रही थी। इससे पहले जो है जो प्रधानमंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जो वहाँ पे साहित्यकार हैं और पुराने और जो महाकवि रहे हैं भरथयार, उनके लिए जो है बीएचयू में चेयर बनाने की मांग की गई थी। उसके पहले जो है कल धर्मेंद्र प्रधान शाम को गंगा घाट पहुँचे थे, जहाँ पे जो महाकवि की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे समागम का आयोजन किया गया है, चूँकि दोनों का कल्चर जो है काशी और अगर तमिलनाडु के कल्चर की बात करें, शिक्षा की बात करें और संस्कृति की बात करें तो उसमें काफ़ी समानताएं हैं। दोनों जो है हिंदू परंपरा के मुख्य स्तंभ रहे हैं उसको लेकर, और दोनों में बहुत पहले से ही आपसी रिश्ते रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे व्यापारिक रिश्ते हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्रों की बात हो। ये कार्यक्रम जो है बीएचयू और मद्रास आईआईटी के द्वारा कराया जा रहा है और साथ में जो है सरकार के जो तमाम विभाग हैं, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, रेल विभाग हो, ये भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो जीवंत करने की कोशिश है उस पूरी शैली की, जो कि कभी काशी और तमिल के समागम से हुआ करते थे। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, जो तमिल भाषी लोग रहते हैं। तो ये जो भी डेलीगेशन है, ये 25,000 लोग, जो माफ़ कीजिएगा 2,500 लोग का जो डेलीगेशन यहाँ पे आएगा जो काशी भ्रमण के दौरान, उनको जो काशी में जो तमिलनाडु के जो भी चिन्ह हैं उनसे उनको रूबरू कराया जाएगा, जो सांस्कृतिक केंद्र हैं वहाँ ले जाया जाएगा। साथ में जो तमिलनाडु के जो पुराने परिवार जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ भी उनसे भी रूबरू कराया जाएगा, और जो महाकवि भरथयार हैं उनके 100 साल पुराने आवास पर भी ले जाया जाएगा और वहाँ पे जो है उनकी जीवन शैली से उनको परिचय कराया जाएगा। जी बिल्कुल. In fact, some very interesting visuals there on our television screens. The Prime Minister, of course, is also dressed in, the traditional dress of Tamil Nadu that men wear. He's, if I'm not mistaken, wearing the lungi as well as the Angavastram, which is on his shoulders. So, the Prime Minister sending the message of One India, sending a message of unity, wearing the traditional Tamil attire as he inaugurates the Kashi Tamil Sangamam. जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की एक खासियत है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा, वहाँ की जो शैली होती है, वहाँ का जो वस्त्र परिधान होता है उसके साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री जब किसी अलग अलग प्रदेश में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, वहाँ पे जो है उनके जो परिधान होते हैं, जो पारंपरिक परिधान होते हैं, प्रधानमंत्री को पहने देखा गया। आज भी जो है चूँकि तमिलनाडु में ये जो तमिलनाडु और काशी का ये समागम का ये कार्यक्रम है, तो यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए जो वन इंडिया की बात होती रही, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की जो बात
होती रही उसको देने के लिए उन्होंने जो है ये लुंगी जो कि पारंपरिक परिधान है तमिलनाडु का, उसको प्रधानमंत्री ने धारण किया है। कहीं ना कहीं एक संदेश देने की बात है। काशी चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से इस पूरे जो कार्यक्रम को वो होस्ट कर रहे हैं, आज उसको इनॉग्रेट करेंगे। इसके बाद से 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है काशी का और तमिलनाडु का, उन दोनों कल्चरों में कल्चर में जो समानता है और जो जिस तरीके से ये सांस्कृतिक और शिक्षा का केंद्र हैं, दोनों जगहें जो हैं, उसको लेकर दोबारा से उसको सोर्स को जीवंत करने की ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि इंटरेस्ट है, इससे पहले उन्होंने तमिल समागम से को लेकर पूरी तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया था और उसमें तमाम निर्देश भी दिए गए थे और साथ ही साथ जो महाकवि भरथायर हैं उनके लिए जो है बीएचयू में चेयर बनाने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो कार्यक्रम को लेकर खुद प्रधानमंत्री भी संजीदा हैं और उसको देखते हुए ये पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम अलग अलग जो है झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें तमिलनाडु और काशी की जो परंपरा है उसका समागम होगा। साथ ही साथ जो बनारस की कुजीन और तमिल कुजीन है, इनका समागम आपको मिलेगा। जो एमपी थिएटर ग्राउंड है वहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं, कल्चर का समागम मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर आपको जो ये काशी तमिल समागम है, ये दोनों कल्चरों को जीवंत करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको पूरी तरीके से जो है लोगों को देखने को मिलेगा। जी, हमको ये भी बताइए मार्टन कि जहाँ तक कि ये 30 डे इवेंट का सवाल है, हमको जानकारी मिली है कि some 2,500 delegates are going to be in attendance. Delegates have also come in to Varanasi from Tamil Nadu. What all is slated for this 30 day event? मार्तन, क्या क्या होने वाला है इन 30 दिनों में? ऐसा क्या क्या है जो लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे इफ दे गो एंड बी पार्ट ऑफ द संगमम? हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो 2,500 जो डेलीगेट्स आने वाले हैं तमिलनाडु से, ये अलग अलग क्षेत्रों के डेलीगेट्स हैं। वो यानी कि शिक्षा, संस्कृति और जो है तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ से ये डेलीगेट बुलाए गए हैं, जो कि बनारस आएंगे। और बनारस में इन 30 दिनों के अंदर जो कि पुराने जो तमिल परिवार यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि बनारस में कई ऐसे मठ और मंदिर है जहाँ पे आज भी तमिलनाडु से वो पुजारी जो है वो तमिल पुजारी ही होते हैं, तो उनसे वो परिचय कराया जाएगा। साथ ही साथ एक समय ऐसा था जो कि बनारस और जो तमिलनाडु के बीच आध्यात्मिक रिश्ते काफ़ी प्रगाढ़ थे। इस आध्यात्मिक रिश्तों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो तमिलनाडु के 12 मठ हैं, उन 12 मठों के जो महंत हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु और ये जो काशी का जो संबंध है, उसको इस 30 दिनों में ये जो डेलीगेट्स आएंगे, वो जो भी आम जनता जो इस उसमें प्रतिभाग करेगी, उन सबको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से काशी और तमिलनाडु के बीच में एक समय में जो संबंध रहे वो कितने मजबूत थे और किस तरीके से आध्यात्मिक संबंध थे। शिक्षा के क्षेत्र में जो है आदान प्रदान होता था, क्योंकि एक समय अगर बात की जाए, अगर दार्शनिक दृष्टि से बात की जाए, तो काशी का जैसा महत्व वैसा ही तमिलनाडु का भी महत्व रहा है। कई बड़े दार्शनिक जो है वो तमिलनाडु से आए हैं और कई बड़े दार्शनिक काशी के क्षेत्र से आए हैं, जिन्होंने एक साथ काम किया और अलग अलग जो है भाषाओं में ग्रंथों की रचना हुई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेडिशन को समझने के लिए जो ये डेलीगेट्स जो आए हैं उनको काशी में भ्रमण कराया जाएगा। जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, वहाँ पे खुद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाएंगे और साथ ही साथ जो तमाम तमिलनाडु और तमिल परंपरा के जो मंदिर हैं वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा, उनसे रूबरू कराया जाएगा। जी, हमको ये भी बताइए मार्टन कि जहाँ तक कि सवाल है इस पूरे इवेंट का, तो ऐसे कितने स्टॉल्स हैं जो कि लगाए जाएंगे? क्या ये जो स्टॉल्स हैं ये तमिलनाडु से जो लोग आए हैं उन्होंने भी लगाए हैं स्टॉल्स? अदर देन द्रविडियन कल्चर, क्या हमको काशी विश्वनाथ का जो कल्चर है वो भी देखने मिलेगा इन 30 दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए ये बीएचयू का जो एमपी थिएटर ग्राउंड है वहाँ पे ये पूरे 75 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के स्टॉल्स हैं। यानी कि एजुकेशन से संबंधित स्टॉल होगा, कल्चर संबंधित स्टॉल होगा, हस्तशिल्प से संबंधित होगा, कुजीन से संबंधित स्टॉल होगा। यानी कि जो दोनों काशी और तमिलनाडु का जो कल्चर है उसका जो है उसको दर्शाते हुए स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे जो है तमाम जो है जो साउथ इंडियन कुजीन है, यानी कि विशेषतः जो तमिलनाडु में है, और जो उनका हस्तशिल्प है जो उसके संबंधित, उनका जो लिटरेचर है उससे संबंधित, और काशी की तरफ से जो काशी के कुजीन्स हैं और जो कि आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनसे संबंधित ये टोटल 75 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें लोगों को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार
ये सब शामिल हैं और साथ ही साथ BHU के साथ साथ जो है IIT मद्रास भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये एक कलेक्टिव प्रोग्राम है दोनों स्टेट्स का और दोनों स्टेट की तरफ से कि चूँकि जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको जो है जीवन दोबारा से किया जा सके और जो लोग हैं दोनों जगहों को ये समझ सके कि क्या आध्यात्मिक संबंध और कैसे आध्यात्मिक संबंध रहे हैं तमिलनाडु और काशी को। तो उसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया जाए। जी मार्टिन, हमारे साथ बने रहिए। वी ऑल्सो हैव अनिला सिंह ऑफ द BJP joining us on the broadcast. Ms. Singh, thank you so much for speaking with NewsX. The Prime Minister has just arrived at Banaras Hindu University moments back. Visuals, of course, on our television screens are from BHU in Varanasi. What do you, have to say, ma'am, of this One India push that the Prime Minister has undertaken? How is this going to help us rediscover our, old connect? My Ramanam to everyone, and I think it is a fantastic step which has been taken by the government, because in this way it will be an opportunity for 2,500 Tamil people who are going to come and visit Kashi, Prayagraj, Ayodhya. And we very well know, if we talk about the religious spirituality and the culture, South has got, especially if I talk about the Tamil Nadu, it has got special place in our culture and spiritualism as well. And Kashi is one place which is being built by Mahadev himself. It is like a center of universe, spiritualism, and it is the land of spiritualism. So definitely it is going to benefit the people of Uttar Pradesh as well as of Tamil Nadu. In a way, they are going to see that what culture prevails in UP, and definitely UP people will also understand that what type of culture comes from Tamil Nadu. So and it is going to be celebrated in a very festive way. So many stalls, so many programs, and so exchange of culture, and one thing is common, that is our spirituality, that is our gods. So common ground is there. The thing is, now Tamil Nadu and Uttar Pradesh, they are going to be together. Absolutely. Thank you so much, Ms. Singh, for speaking to NewsX, for giving us your, of course, analysis on the Prime Minister's One India push. We're also being joined by Joyita Basu. Thank you so much, Joyita ma'am, for speaking with us. What do you make, ma'am, of this One India message, Ek Bharat, Shresht Bharat push of the Prime Minister's? It's indeed a very interesting event. This is the first of its kind, 30-day long event. There are going to be 2,500 delegates from Tamil Nadu that are going to be in Varanasi for one entire month. On display is, of course, the rich culture, the rich heritage that not only Kashi has to offer, but also that Tamil Nadu has to offer, dividend culture. What do you make, ma'am, of this One India push? Do you think this is what is now required in Indian politics? Well, I think it's a very, good move. And more importantly, let's also not forget that as Tamil Nadu and people of Tamil origin and Tamil people say that they have always had a very close link with Kashi, Vishwanath. And it said that, there are many temples in Tamil Nadu that have, that have the name of Kashi in that. And it seems, they have had, earlier rulers of Madurai and all, they traveled to Kashi Vishwanath and took Lord Shiva from there to set up a temple in Tamil Nadu and Madurai. And so as a result of which, you see, there is a very close link that Tamil, and even otherwise Tamil Nadu was as a center of learning, Varanasi as a center of learning. There has been a very, very close connect and a very long connect. If you go to Varanasi, in fact, that is something that is one of the first things that you notice on the ghats. You see, from the number of people, a huge number of people who come from Tamil Nadu and the other states also, from the southern parts of India, you can make out from the way they wear their tilak on their forehead and the flowers on the women wear those flowers on their hair and all. There are hundreds and thousands of them in Vishwanath on any given day. Around Vishwanath temple, around on the Dashashwamedh Ghats and the other ghats are there.
So it is a very old linkage that Kashi, I mean, when it looks at Kashi, North India and South India, I mean, the Varanasi stands as a melting point of that. Where the North and South, they come together and they kind of, so this is what this program that is being organized, it seems it's being organized by the Ministry of Education, culture, textile, a whole lot of them are involved in this. So it is basically, this is the celebration of the ties between the north of India and south of India. And this is what it is about. Absolutely. And, ma'am, I also want to ask you a little bit, I also want to rake your brains over what happens next, where do we go from here? Because, like you said, there's a very rich history, there's a very rich culture that ties Tamil Nadu and Kashi together. In fact, the Pandyas, when they were ruling, they also constructed the Kashi temple in Tenkasi in Tamil Nadu. Now, of course, the Prime Minister is bringing back those age-old connections between the two places. What is the next push, ma'am? What happens from here? The development undertaken of Kashi Vishwanath, do you think something like that must also be done to restore all of our jewels and temples in Tamil Nadu as well? I think Tamil Nadu, if you ask me, in the whole of India, it was only Tamil Nadu, basically south of the Vindhyas. I mean, it was in south of the Vindhyas where the temples were protected properly. Not so much destruction took place as it was in the north, because everything was destroyed in the north by the invaders. So I think Tamil Nadu, especially South India, was spared that to a large extent. So I do not think they will really need in terms of, restoring temple, of course. I mean, preserving temples, restoration where problems have happened. That's, of course, an important issue. But I think what has happened is that in North, basically, the temples have to be really restored in a big way, because most of these have been demolished. Even for that matter, Kashi Vishwanath temple was also demolished. And what we have now is a temple that was built much later. Somnath was demolished. But not that kind of a fate has really befallen the southern temples. So that way they have been lucky. But at the same time, you see, India is a land of spirituality. It is actually. If there is something that connects the whole of India, much before, I would say, what we talk about, Bollywood and cricket, it was spirituality that connected India. It is through our folklore, our religious texts, our religious beliefs. We have all these peats, what we call, those 51 peats. They are spread all over India, in south, north, west, east. You see, so this is the spirituality that connects us. And this is the spirituality, that is why, India is really one, because when it comes to people of Tamil Nadu, they find an easy connect with Varanasi. Even if you look at Bengal, I mean, they relate to Varanasi so well. So in a way, if you look at it, it is the spiritual heart of India. Varanasi represents the spiritual heart of India, and to which everyone from across the country, as a Hindu, they connect to Varanasi. So that way, Varanasi is playing a huge role in bringing India together. Absolutely, ma'am. Bringing India together, that is one. Another is also, the push by, of course, the PM. Very interestingly, ma'am, and, some of the visuals on our television screens right now are of the Prime Minister. When he arrived in Varanasi, he's wearing, the lungi and the Angavastram, which are the official attires of, the Tamil people. What sort of a message does that also send out, ma'am? Does it show on part of the Prime Minister, some sort of deep understanding on what it is that the nation needs? It is, of course, it's a message of unity. It is a question of respecting a particular ethnic group's faith, culture. Faith, of course, is the same faith everywhere, but I would say the culture and their dress and everything, it's a respect to them. And I think many people, even now, this is something very Indian. And that is what the Prime Minister is trying to show. That when you are with somebody, you are trying to, you're going to a Tamil Sangam, this thing. So obviously it is, he will be wearing something that is coming from that particular region. So I think it is a message of
unity and respecting people's culture. All right, thank you so much, Joyita ma'am, for joining us on the broadcast and speaking to us, giving us your analysis of this, push that the Prime Minister is making in Varanasi now. Also with us is my colleague Martan. Martan is currently in Varanasi. He's going to help us understand better what to expect from this 30-day long event. Martan, what more details can you get us as far as this event is concerned? What do we expect from it now? What all is the Prime Minister going to be doing? I'm given to understand that he's also going to be inaugurating a couple of books based on Kashi as well as Dravidian culture. Do you have any more details with regards to that? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू थिएटर ग्राउंड जब पहुंचेंगे उसके बाद जो है इस जो पूरा ये समागम है इसकी शुरुआत करेंगे। मतलब ऑफिशियल जो है इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पे जो 75 स्टॉल्स लगाए गए हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के हैं, यानी कि वो मतलब हस्तशिल्प से संबंधित हैं, संस्कृति संबंधित हैं, लिटरेचर संबंधित हैं, उन स्टॉलों पर घूमेंगे, उनको देखेंगे और साथ ही साथ जो IIT मद्रास के जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं उनसे जो है वो बातचीत करेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों कल्चर है इनको एक साथ लेकर आगे बढ़ाया जाए और क्या क्या करने की जरूरत है, जो कि तमाम चीज़ें जो पीछे छूट गई हैं उसको किस तरीके से दोबारा जीवित किया जाए। उसके बाद जो है आपको बता दें इस पूरे कार्यक्रम के बारे में तमाम अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जो लोक नृत्य हैं जो कि तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर होते हैं, भरतनाट्यम हो गया, और इसके अलावा जो भी आसपास जो भी वहाँ के जो स्थानीय लोक नृत्य हैं उनको भी जो है पेश किया जाएगा, जो कि तमाम जो ये डेलीगेट्स हैं वो देखेंगे जो तमिलनाडु से आएंगे। साथ ही साथ ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पूरा वो प्रोग्राम शुरू किया गया था, उस प्रोग्राम के तहत तमिलनाडु से भी जो 38 अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जगह हैं वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस प्रदर्शन में लगाए जाएंगे, यानी कि कांजीवरम की साड़ियाँ होंगी, कन्याकुमारी के नट्स होंगे और साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड काजू जो होता है और मदुरई का जो रेडीमेड गारमेंट्स है, ये सारे इस प्रदर्शन। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.